Hello friends, welcome back to our YouTube channel Hope to Glow. Friends, I'm back with a series of 10-line essay or 10-line sentences in English as well as in Urdu. Let me tell you friends that we are learning each and every sentence in English as well as in Urdu so that we have better understanding of each and every sentence. Before starting this video, I request you to subscribe my channel and thumbs up and share it with your friends. Today, the topic that we will cover is health is wealth. Let's get started. In our life, it is very important for our bodies to be healthy. हमारी जिंदगी में हमारे जिस्म का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है. Taking care of our health should be our first task. अपनी सेहत का ख्याल रखना हमारा अव्वलीन काम होना चाहिए. A healthy person does his work with full enthusiasm. एक सेहतमंद इंसान अपना काम पूरे जोश और खरोश से करता है. The person who is in good health is actually rich. जो शख्स अच्छी सेहत में है वो दरअसल अमीर है. Money health is useless when your health is not good. जब आपकी सेहत ठीक ना हो तो पैसा दौलत बेकार है. We should take care of our health. हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए. For good health, we should take balanced and nutrition food. अच्छी सेहत के लिए हमें मुतवाज़न और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक लेना चाहिए. Regular exercise is also very important for good health. अच्छी सेहत के लिए बाकायदा वर्जिश भी बहुत ज़रूरी है. Exercise keep our body healthy for a long time. वर्जिश हमारे जिस्म को तवील अरसे तक सेहतमंद रखती है. That is why we should take a balanced diet and exercise regular. इसलिए हमें मुतवाज़न खुराक लेनी चाहिए और बाकायदगी से वर्जिश करनी चाहिए. In our life, it is very important for our bodies to be healthy. हमारी ज़िंदगी में हमारे जिस्म का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है. Taking care of our health should be our first task. अपनी सेहत का ख्याल रखना हमारा अव्वलीन काम होना चाहिए. A healthy person does his work with full enthusiasm. एक सेहतमंद इंसान अपना काम पूरे जोश और खरोश से करता है. The person who is in good health is actually rich. जो शख्स अच्छी सेहत में है वो दरअसल अमीर है. Money health is useless when your health is not good. जब आपकी सेहत ठीक ना हो तो पैसा दौलत बेकार है. We should take care of our health. हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए. For good health, we should take balanced and nutrition food. अच्छी सेहत के लिए हमें मुतवाज़न और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक लेना चाहिए. Regular exercise is also very important for good health. अच्छी सेहत के लिए बाकायदा वर्जिश भी बहुत ज़रूरी है. Exercise keep our body healthy for a long time. वर्जिश
ہمارے جسم کو طویل عرصے تک صحت مند رکھتی ہے. That is why we should take a balanced diet and exercise regular. اس لیے ہمیں متوازن خوراک لینی چاہیے اور باقاعدگی سے ورزش کرنی چاہیے. In our life, it is very important for our bodies to be healthy. ہماری زندگی میں ہمارے جسم کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے. Taking care of our health should be our first task. اپنی صحت کا خیال رکھنا ہمارا اولین کام ہونا چاہیے. A healthy person does his work with full enthusiasm. ایک صحت مند انسان اپنا کام پورے جوش اور خروش سے کرتا ہے. The person who is in good health is actually rich. جو شخص اچھی صحت میں ہے وہ دراصل امیر ہے. Money health is useless when your health is not good. جب آپ کی صحت ٹھیک نہ ہو تو پیسہ دولت بیکار ہے. We should take care of our health. ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. For good health, we should take balanced and nutrition food. اچھی صحت کے لیے ہمیں متوازن اور غذائیت سے بھرپور خوراک لینا چاہیے. Regular exercise is also very important for good health. اچھی صحت کے لیے باقاعدہ ورزش بھی بہت ضروری ہے. Exercise keep our body healthy for a long time. ورزش ہمارے جسم کو طویل عرصے تک صحت مند رکھتی ہے. That is why we should take a balanced diet and exercise regular. اس لیے ہمیں متوازن خوراک لینی چاہیے اور باقاعدگی سے ورزش کرنی چاہیے.